Assalamu alaikum. Students, in this lecture we solve part number 1, question number 3 of exercise 1.1. Question is 7x square plus 2x minus 1. We have to find the value of x, or we have to solve the equation by completing the square. There are 2 to 3 steps to solve these types of question. If you learn properly those steps, then it is easy to solve this question. If you do not learn those steps, then you feel difficulty to solve these types of question. Step number 1 is we have to make one coefficient of x square. आपको इस सवाल को हल करने के लिए चंद स्टेप्स याद करने पड़ेंगे. अगर उन स्टेप्स के अलावा अगर आप करेंगे तो आपको इस टाइप्स के इक्वेशन को सोल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी. सबसे पहले स्टेप क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है. बट हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7. what we do, we divide the whole equation by 7, then here the coefficient will become 1. this is step number 1. जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर दिया हो उसे 1 बना दें. किस तरह से बनाएंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. सो यू डू नॉट राइट दिस स्टेप्स. ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पर स्टेप ड्रा कर रहा हूँ. आपने स्टेप्स नहीं लिखने, ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखने. तो सबसे पहले मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x square divided by 7, 2 over 7x minus 1 over 7, that is equal to 0. Here we get x square plus 2 over 7x minus 1 over 7 is equal to 0. Step 2 is we put the constant term on the right side of equal. जो भी constant term होगी उसको right side पर ले जाएंगे. Now we get x square plus 2 over 7x, that is equal to plus 1 over 7. Minus 1 over 7 become plus 1 over 7 on the right side of equal. Now step number 3. You do not draw the steps like this. Step number 3 is divide the coefficient of x by 2. स्टेप नंबर 3 क्या है, हमने x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देना है. तो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 over 7. वी डिवाइड इट और मल्टीप्लाई बाय 1 over 2. जो भी कोफिशिएंट होगा उसे 1 over 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 2 1 the 2, 2 1 the 2, रिमेनिंग विल बी 1 over 7. जो भी यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर देंगे. स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपके पास, स्टेप नंबर 3 जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1 over 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है. जो भी आपके पास जवाब आएगा उसके स्क्वायर को इक्वल के बोथ साइड पर ऐड कर देंगे. Like this, x square plus 2 over 7x plus here we get 1 over 7, we add 1 over 7 square on both sides, 1 over 7 square, and here 1 over 7 plus 1 over 7 square. क्योंकि जो भी हमने स्टेप करते हैं हमें इक्वल के बोथ साइड पर उसे परफॉर्म करना लाजमी होता है. एंड दीज 4 स्टेप्स यू नीड टू लर्न, देन ऑल क्वेश्चंस आर सेम, यू कैन ड्राइव easily. Now it can be, as we solve it by completing the square, so we make the formula of completing square. It can be written as x square, and it is already in the form of 1 over 7 square. It is here a and it is b. Now plus 2a, a is x, b is 1 over 7, and if we multiply these numbers we get 2 over 7x. Okay, now it is in the form of a square plus 2ab plus b square.
Here we get 1 over 7 plus 1 over 49. Now it can be written as you know that this is the formula of a plus b whole square. So it can be written as in the form of a plus b whole square. Here a is x, b is 1 over 7. So we write it x plus 1 over 7 as a complete square, because we have to solve it by completing the square. And here we take the LCM, 7 and 49, we get LCM as a 49. And when 49 divided by 7, we get 7, 7 1 the 7, and here we get 1, and we get 8 over 49 when we add it. Now x plus 1 over 7 whole square, that is equal to 8 over 49. To find the value of x, we have to remove this square. To remove this square, we take the square root on the both sides. When we take the square root on both sides, here we write plus and minus. You know that why we write here plus and minus. This square and square root cancel out. We get x plus 1 over 7 is equal to plus minus. When we take the square root of 8, we get 2 into 2 square root, and the square root of 49 will be 7. How? 8 square root, it can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2, and this is the pair. It can be written as 2 square multiplied by 2 whole square root, and 2 square root multiplied by 2 square root. Square root cancel, 2 into 2 square root. Okay, now 8 square root will be 2 into 2 square root, and 49 square root will be equal to 7. And here I write here x plus 1 over 7, that is equal to plus minus 2 into 2 square root over 7, and we have to find the value of x, and it is plus 1 over 7, it becomes minus 1 over 7 on the other side of equal, and here minus 1 over 7, we take the LCM, that is equal to 7, and here we get 2 over 2 square root minus 1. And now we find the two values of x. One is plus 2 into 2 square root minus 1 over 7, and second value of x is minus 2 into 2 square root minus 1 over 7. And the solution set will be, you can write it, आप इसको एक साथ इकट्ठा लिख सकते हैं. दो वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस के साथ आई है और एक माइनस के साथ आई है. आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और इकट्ठा कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. अब हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो मैं इसको जो -1 है उसको पहले लिख लेता हूँ, और ये प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट को बाद में लिख लेता हूँ. अरेंज करके लिखा है, जस्ट 2 वैल्यू थी इसलिए इसे मैंने बाद में लिख दिया है. अब पहले भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें. एंड दिस इज दिस सोल्यूशन सेट, एंड दिस इज part number 1 of question number 3.